as a history optional student, we have certain advantage over other students when it comes to prelims preparation. A lot of students who are GS students, they cry about history preparation. हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री में एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड, ये वो. नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट would get about 10 questions right out of 8 to 10 questions. Based on my experience and our students in the past, आपको बाकियों के तुलना में 4 सवाल ज्यादा आना बहुत ही easily possible है. Why is there a fear of history in the mind of students, especially even in the mind of history optional students? Just tear it down. उसकी तक को फाड़ दो और फाड़ के हर चैप्टर के एंड में hello, good evening everybody and welcome to our series of called History Darbar. This is the 4th version that we started a few months ago, Vishal sir and me both. कि जो कोई टॉपिक्स पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, एंड बाय पब्लिक इंटरेस्ट आई डोंट मीन वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के हिस्ट्री रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट, उसके लिए वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज कॉल्ड हिस्ट्री दरबार. ओकेजनली वी कम फॉर चिट चैट विद ऑल ऑफ यू. नाउ दिस टाइम देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कंसर्न. couple of days ago I was talking to a student and he is our student in test series. उसने लास्ट ईयर संडे लाइव का कोर्स भी किया है. ही हैज हिस्ट्री ऑप्शनल एंड he was confused about how to prepare for history for prelims, and because of his queries I got confused. What is the confusion there? So he was confused, I was confused about his confusion कि ये confusion क्यों है. So my point is I discussed with him a lot to understand that there are some possible problems that history optional students might face when it comes to history GS preparation, and if the approach is not correct, it might lead to wastage. And by wastage I mean आपका जो advantage, the advantage you must have because of history optional in prelims GS, we should not lose that just because we don't know the right strategy. तो आज का पर्पस लिमिटेड पर्पस है. वी वांट टू डिस्कस विथ यू द स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन ओनली एंड ओनली फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर सब्जेक्ट. वी आर नॉट हियर टू डिस्कस एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन. दैट इज नॉट द एजेंडा फॉर द डे. वो हम 10 तारीख को अलग से बात करेंगे. आज का एजेंडा स्पेसिफिक है. इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री प्रीलिम्स, तो आपको क्या करना है and क्या नहीं करना है, what we should do, what we should not do. That is a very limited agenda. Secondly, I'll allow all of you to ask questions at the end. पहले हम शायद 20 मिनट के लिए 20 minutes around let all of us, मतलब विशाल sir and me discuss some things, tell you some larger framework, main idea, and hopefully that will resolve all your problems. On top of that, if you have any doubt, we'll discuss at the end after 20 minutes, 30 minutes. I hope it is fine. So, पहली बात, let me open the chat box also here so that I can see what are the issues. Yeah, good evening all of you. Sangram is also here. So the idea of this thing was given by Sangram only. ठीक है. So पहली बात तो समझो that as a history optional student, we have certain advantage over other students when it comes to prelims preparation. And that advantage has to be capitalized upon. Look, advantage क्या है? It's a twofold advantage. The first thing is in the number of questions. अभी हिस्ट्री के सवाल कितने आते हैं प्रीलिम्स में? Around 15 to 18 questions come from history and culture together. About 15 to 18, the number varies from year to year. Of those 15 to 18 questions, if you divide them into subparts, what is the proportion? 1 or 2 questions come from ancient India, 1 or 2 questions come from medieval India, 8 to 10 questions come from religion and culture, 4 to 5 questions come from modern India. That is the ballpark general range with which UPSC is going for the recent few years. ये लगभग रेंज है, 1-2 प्लस माइनस हो सकते हैं. ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 3-4-5 सालों से.
एंड वी हैव टू प्रिज्यूम दैट इसी के आसपास कुछ ट्रेंड होगा. रेडिकल शिफ्ट कर रही है तो अलग बात है, नोबडी वुड सी दैट, बट एटलीस्ट दिस इज द ट्रेंड. नाउ अगर ये टोटल 18 सवाल आते हैं समझो, तो 18 सवाल में और 15 सवाल में what is the general trend? How many questions a GS student who doesn't have history optional background, उसके कितने सही होते हैं? अगर उसने सही से पढ़ा है, उसने कोचिंग ठीक से किया है या किताबें खुद से पढ़ी है, PYQs करे हुए हैं, तो जनरल स्टूडेंट, नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट वुड गेट अबाउट 10 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 18, 8 to 10 क्वेश्चंस. मतलब 50% से थोड़ा ऊपर उसका एक्यूरेसी होगा. दैट इज वन. But once you come to history option, we should have a very target which is very realistic. When I was talking to Sangram, I thought he was a little bit over ambitious कि मेरे को history के 18 में से 18 आने ही चाहिए. That is again a little bit too ambitious target. But it should not be also less. It should not be at the level of 10. We need to have certain advantage over other GS students. So I think based on my experience and our students in the past, आपको बाकियों के तुलना में 4 सवाल ज्यादा आना बहुत ही इजीली पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है. सो इफ द अदर्स आर गेटिंग 10 out of 18 राइट, यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 14-15 out of 8. 13, 14, 15 के रेंज में आपको 3 से 4 सवाल का मिनिमम एडवांटेज. बट डोंट बिकम टू ग्रीडी एंड से कि मेरे 18 के 18 सही होने चाहिए. दैट इज नॉट अवर टारगेट. परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ दिस प्रिपरेशन. So that is one thing. What is our rational target? The rational target is 4 questions over and above GS questions, but not the 8 questions. ये आप समझ लो. So this one advantage we have, we should not lose this advantage. ये 4 साल में आने चाहिए. 10 नंबर से पूरा फर्क पड़ जाता है. That is one. The second advantage that we have is the time advantage, and this is very interesting. आप देखो अभी lot of students who are GS students, they cry about history preparation. हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री में एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड, ये वो इतनी किताबें. इवन इन GS फाउंडेशन कोर्स which is a standard structure nowadays, about 80 lectures, about 80 lectures go for only history subject for GS foundation. तो हिस्ट्री तो रिलेटिवली बड़ा है, नो डाउट. बट बात यह है उसका बड़े का जो बड़प्पन है, दैट इज फॉर द GS स्टूडेंट. For the optional student, we anyway study that we have huge overlap. आप जितने टाइम उसमें दे रहे हो, जितना सिलेबस पढ़ रहे हो, उतना ही सिलेबस का लगभग 60% पढ़ना GS के बच्चों को करना ही करना है. So GS people also spend about 60% time into history of what you give. तो आपने तो वो कर लिया है, you have already done that. Then you should preserve time. You should conserve time rather. You should save your time. संग्राम के साथ बात करके I got to know one more thing. तो asking me, मैं और क्या पढ़ूं? मैं प्रीलिम्स के लिए अलग किताबें कौन सी पढ़ूं? Should I read Spectrum? Should I read Upinder? Should I read बंदोपाध्याय? Should I read नितिन सिंघानिया, etc. तो my point was, if you start reading all these books, these are good books, maybe may not be, इसकी बात हम करेंगे कितनी अच्छी है कितनी खराब है. But if you start opening up additional books for every part of ancient, medieval, culture and modern, then the advantage of time that you have will be lost. वो हमें नहीं करना है. We have to minimize our GS history preparation. Minimize. अगर आप वो सारी किताबें दोबारा पढ़ोगे तो GS का बच्चा पढ़ रहा है तो आपका एडवांटेज रादर जो आपके दिन बचेंगे, maybe you will end up saving a month. A month का time is a huge. GS का बच्चा अगर 1 महीना दे रहा है हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, सब कुछ जोड़ जाड़ के, आपका 1 महीना बचेगा. यूज इट वाइजली, डाइवर्ट दैट टाइम टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ GS. मे बी साइंस हो, मे बी एनवायरमेंट हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, व्हाटएवर. डोंट लूज दैट टाइम. वहां 1 महीना एक्स्ट्रा मिलने से वहां भी आपके 2-4 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे आराम से. सो ओनली बाय डिंट ऑफ हैविंग हिस्ट्री ऑप्शनल, यहाँ पे 4 सवाल, वहां पे 4-6 सवाल, 10 सवाल का फर्क पड़ सकता है इफ यू हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी. बट दैट मीन्स यू शुड नॉट कमिट 2 मिस्टेक्स. फर्स्ट, यू शुड नॉट ओवर टारगेट. 14 सवाल ठीक है, 18 की जरूरत नहीं है. एंड सेकेंडली, यू शुड नॉट चेंज लॉट ऑफ बुक्स. डोंट ओपन लॉट ऑफ न्यू रिसोर्सेस. 1-2 ठीक है, और जहां जरूरत है हम बात करेंगे, बट नॉट एवरीवेयर. If you have these 2 things clear in your mind, only and only then we'll get the advantage of 8 to 10 questions. I think so far
एक प्रीमाइस अच्छे से सेट हो गया है, यू नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ. नाउ लेट मी कम टू सेकंड पार्ट कि why is there a fear of history in the mind of students, especially even in the mind of history optional students. क्या है अलग से भाई? तो दो चीजें. The first thing, तीन चीजें, I would say three things. The first thing is that questions become factual sometimes. That is one. And even for optional students जो कि perspectives पढ़ते हैं, जो कि analysis पढ़ते हैं, the facts might be a little tricky. Sometimes वो problem हो सकता है. That is one. That's why some of you may be afraid, despite having history optional, कि GS के लिए क्या करें? Questions बड़े factual होते हैं. The second problem is that there is dominance of culture and religion. ये वही पार्ट्स है, रिलीजन एंड कल्चर, जो कि हम ऑप्शनल में ज्यादा नहीं पढ़ते. We don't go into lot of details in case of history optional for culture and religion, in which UPSC is highly interested in both pre and mains. खास करके GS1 में, मेंस में भी, एंड प्री में. मैंने कहा कि 15 to 18 क्वेश्चंस में से more than 50% क्वेश्चंस come from religion and culture only. So that might make us a little afraid. And तीसरी बात ये है, तीसरी बात ये है that there is no good textbook for the portions on which we have to work upon. So lack of good textbook also creates a major problem. Some books are too large, some are too factual, some are not logically written books, etc. So these are the three things that might make the GS history prelims preparation even difficult, even for the history of the students. अब इसका solution क्या है? I think we should discuss section by section. एक section लेते हैं, and then it will be better understood. And time ना, yes. I would suggest sir कि क्वेरीज अगर लोगों के मन में है तो दे शुड होल्ड ऑफ देयर क्वेरीज टिल द एंड. एक बार हम लोग ये डिस्कस कर लें, उसके बाद वी विल थ्रो द फ्लोर ओपन. हाँ, इफ यू गाइस हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज, जैसे कि मान लीजिए अभी सर मान लो एंशिएंट एंड मेडिवल, रिलीजन एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सेक्शंस डिस्कस करेंगे. अगर उन सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वाइल दैट सेक्शन इज बीइंग आस्क्ड, उस समय उनको हम एड्रेस कर सकते हैं. तो अगर उस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क देन. राइट. तो ये करते हैं कि लेट मी पिक अप एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस वन बाय वन. पहले एंशिएंट मेडिवल, देन कल्चर, एंड देन मॉडर्न. एंड इफ यू हैव एनी सेक्शन स्पेसिफिक क्वेरी अबाउट एंशिएंट मेडिवल, आप तभी पूछ लो, तभी मैं आंसर कर दूंगा. Similarly for culture and similarly for modern. If you have generic query about overall strategy for history, etc., then we can discuss them at the end. ठीक है. So let us begin with, देखो, in history option we have four: ancient, medieval, modern, and world. Now of those sections, world history is not there in prelims. वो तो बात ही खत्म हो गई. Even post independence is not there in prelims, although it is not very clearly said. और एक दो बार यूपीएससी ने पोस्ट इंडिपेंडेंस सवाल पूछ लिए हैं, बट रैंडम एंड दे कम वंस इन अ ब्लू मून. इट डजंट मेक आंसर्ड विद इन द realm of sometimes economy, sometimes polity also. तो यस प्लानिंग से आते हैं तो दैट कैन बी कवर्ड इन इकोनॉमी एटसेट्रा. तो हम उसको उस तरह हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं मानते. आईआर के सवाल भी होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना. सो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आर आउट ऑफ पिक्चर फॉर प्रीलिम्स. We have then four parts remaining: ancient, medieval, culture, and modern India. Let us pick them one by one. The first two part, ancient and medieval. Now, ancient medieval, ये दो पार्ट है. इसमें there is very peculiar thing. Peculiar ये है कि वहां से सवाल बड़े कम आते हैं. As I said, medieval तो बीच में 2-3 साल गायब भी हो गया था. Ancient भी, when I say ancient medieval, I mean politics, administration, society, and economy. I do not mean the culture and religion. Religion culture को हम अलग से पढ़ेंगे. तो नॉन रिलीजियस, नॉन कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट मेडिवल की बात अभी कर रहा हूं. तो इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं. एंड दैट ट्रेंड इज, आई थिंक दैट ट्रेंड स्टार्टेड आफ्टर सिलेबस चेंज इन 2013. पोस्ट 2013 धीरे धीरे एंशिएंट मेडिवल क्वेश्चंस कम हो गए. कभी कभी एक दो, कभी कभी 3 सवाल, इतना ही आता है. सेकेंडली, ये क्वेश्चंस बड़े फैक्चुअल होते हैं, बहुत फैक्चुअल होते हैं, बट दे आर नॉट टू डिफिकल्ट. इफ यू नो बेसिक आइडिया, वो हो जाते हैं. सो व्हाट माय मेन पॉइंट इज दैट इसके लिए फॉर दिस सेक्शन ऑफ एंशिएंट मेडिवल, वी हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स
do not need to read anything else apart from what we anyway study for history. Option. कोई भी किताब अलग से उठाने की जरूरत नहीं है. You are already doing well. You have your notes for optional. You have your resources for optional. आपने जो किताब पढ़ी हो, संग्राम नहीं पूछा शुड आई रीड उपिंदर सिंह. मैंने कहा अगर आपने उपिंदर सिंह पहले नहीं पढ़ी है, then do not open it. It's a massive book. इसमें इतने फैक्ट्स हैं कि करते करते नाक में दम आ जाएगा. और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट करना तो और मुश्किल है. हाँ, देयर कुड बी वन ऑफ क्वेश्चन, जैसे सवाल था अरघट्टे के ऊपर सवाल पूछा था, अरघट्टे इस किताब में दिया है, बट बात है कि एक सवाल हमें 18 से 18 सवाल नहीं करने, हमें 18 में से 14 सवाल करने. सो फॉर वन रैंडम क्वेश्चन इफ यू आर गोना इन्वेस्ट 2-3 वीक्स ऑफ टाइम and then even after that there is no guarantee सवाल वहां से आएगा, it makes no sense. It's not a good strategy. So my first suggestion would be for ancient medieval, do not open up any new book. Just revise your content of history optional very quickly. पन्ने पलटे आपके पास जो किताब हो, जो आपने ऑप्शन में पढ़ी हो, जो नोट्स हो, उनको आप जल्दी से कवर करिए. That is more important. अब उसमें अगर आपने ऑलरेडी उपेंद्र पढ़ी हुई है, then you can do it. But don't do it separately. That is my main point. The second thing you need to do, the first point is revise your already existing material. The second point is, actually that point is common for all the parts, but let me explain it here. Second point is PYQs. The PYQs are very, very, very important. In case of history, we have to do PYQs of the time since 1979. जब से अवेलेबल PYQs है, या 89 जब से अवेलेबल है, सारे कर लो. Now, how to do that PYQs and why to do so old PYQs also, मैं आपको बताऊंगा दो चीजें उसमें. पहली बात, PYQs have a habit of repetition. I remember in 2014-2015 एक सवाल उन्होंने 2 बार पूछा, इस बार पूछा, अगले साल exact same question बुधा वाला with same options they asked the question. So there is some possibility of repetition. Secondly, if not the exact question, the themes get repeated. I can give example also. अभी 2-3 साल पहले they asked a question on that some legal text in ancient India about slavery also, and then some legal text also about inheritance वगैरह. ये दोनों सवाल 2015, 2025 में, 24 में, 23 में बहुत मुश्किल लगे बच्चों को. But both of these questions which were thought to be very random were actually inspired by old PYQs. 1990s में सवाल का एक वर्जन पूछा था, उनका नेक्स्ट वर्जन पूछ लिया 20 साल बाद. So either questions get repeated or themes get repeated. If not, the facts get repeated. जो 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन के, चारों ऑप्शंस, all those 4 ऑप्शंस समझो. हमारा PYQ करने का मतलब क्या? I don't mean that you should have the right answer alone. आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, जवाब सही आ गया, वहां पे काम खत्म नहीं होता. You should also have a good understanding of rest of the 3 options which are wrong options. अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही है, why to go for a new book like Upinder Singh or any other book? You should rather have these 30-40 years की PYQs. Every PYQ would have 4 facts within it, क्योंकि 4 options होते हैं. Let us say you have 100 PYQs of ancient. 100 into 4, you have 400 facts. Those facts should be very clearly known to you. आपके किताब में, आपके नोट्स में अगर कुछ आपको वैल्यू एडिशन करनी है एप्रोप्रिएट जंक्चर पे उसी चैप्टर में, तो बस ये फैक्ट्स, 400 फैक्ट्स उसमें आ जाए. That is very important. So my suggestion for ancient medieval is only 2. Revise your existing material very quickly. You already have a good idea of timeline and context. Logic से आधे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे आपके. And secondly, do all the facts of all the PYQs of last 30-40 years. And if you want to do value addition, utni karo. These 2 things are extremely important. Ab let me see some doubts. Anil is asking, sir, how to cover terms of ancient medieval apart from Vishal sir optional notes? देखो अनिल, ये terms की जो चीज है ना, you already know a lot of terms. अब आप I need to know. Yes. Sorry sir, कि out of 18 you do not need to get all 18 right. यार 4 छोड़ के भी आने हैं, उसमें से नहीं भी attempt करना है, relative advantage लेना है आपको यहाँ पर. That is what you need to keep in mind. ये जो टर्म की जो बात है ना, ये अनिल उनके लिए होती है that some lot of people actually don't understand the context of history, so they think these are facts to be memorized. For you, these terms are not facts, they are context.
you understand them easily over and above other students. So the chances of you getting wrong are less. If a GS student can make it right, you can definitely make it right. If GS student cannot make it right, chances of making right are existing there. So ये फर्क समझो. Even then, this is my solution. But even then, if you want to have a proper structure, मुझे करना ही है glossary of terms. तो glossary पढ़ लो. In NCERT, new and old, at the end of chapter and end of the book, you have terms glossary. बट सर दैट इज अ फूल्स एरेंड. वो नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट I know. कि Even वो I don't suggest that. बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न मिले ना मिले कोई पक्का श्योरिटी नहीं है उसमें. Yes. Agreed. So technically नहीं करना चाहिए, but sir क्या होता है ना, some students might have FOMO about it कि मुझे करना है. I'm feeling less confident about it if I don't do it. तो उस केस में if you want some concrete strategy, not recommended, but अगर concrete चाहिए तो NCERT के पीछे terms of glossary दिए हुए हैं, उनको आप एक बार पढ़ लो, उससे काम हो जाए. ठीक है. This is about. Now we have second query from anonymous. I have not read any book for optional also. I have just done foundation notes from YouTube and Sunday Live. Do I have to cover any book? No, you do not need to cover any book in that case. That was the main point. Either if you are done from books, then from books. If you are done from notes, then from notes. क्योंकि सवाल आने एक या दो सवाल, उसके लिए picking up a new book altogether is practically impossible. Very few returns. So this is a basic strategy for ancient medieval. Revise your existing material. Do 30-40 years PYQs into 4 options. Value addition. आपको glossary करनी है तो NCERT glossary अगर करनी है तो I can add one more thing. You can go on YouTube. On YouTube we have something called as Revise Through 500 Questions, RTFQ. Both Vishal sir and me are taking it for last 2-3 years. Every year, 1 month before prelims, we go on YouTube and we cover the whole syllabus through PYQs and other practice MCQs chapter by chapter. तो हो सकता है कि 10 hours में entire ancient India, 10 hours में entire modern India हमने cover किया हो with only questions, chapter by chapter, section by section. So if you want to have any practice of questions, you can just go on YouTube and watch RTFQ. अभी भी 25th May को अगर prelims है तो उसके एक महीना पहले we'll have RTFQ. You can do it at that time as a revision. That will be very helpful. इफेक्टिव होता है, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बहुत कम टाइम में. Yes, correct. So that is about ancient and medieval. Now let me go to next section, and which is art and culture. So this is a very big chunk. Out of, as I said, 15 to 18 questions, 10 questions के आसपास लगभग यहाँ से आते हैं. और इसके लिए दो प्रॉब्लम्स तो समझो. फर्स्ट थिंग इज दैट इन हिस्ट्री ऑप्शनल वी डू नॉट कवर इट इन इनफ डिटेल्स. ये एक एरिया ऐसा है जहां पे जीएस पीपल हैव टू डू मोर देन हिस्ट्री ऑप्शनल पीपल. सो हमें भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर रेगुलर मटेरियल फॉर आर्ट एंड कल्चर. देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर शॉर्टकट. Advantage we have is we understand broad context and timeline better, so we can learn it faster, we can relate it faster, we can understand it faster, remember it faster. But करना तो पड़ेगा. If you have to do any additional source, this is the part. Second thing, not only that it is very important in questions, as I said, प्रीलिम्स में इतने सवाल आते हैं, जीएस में भी, GS1 मेंस में भी अगर 6 सवाल हिस्ट्री के आते हैं तो 6 में से 3 सवाल कल्चर के ही आते हैं. तो even for GS1 mains, this culture part is very important. Not only that, it is important in prelims and mains. इसकी अहमियत with coming time is going to increase further and further because of the present government. So, Gulshan, let me finish this part, then I will take the question now. ठीक है? Now, because of the present government, in recent time, Indology, a study of culture, study of something called as IKS, Indian knowledge system, is increasing. And as a matter of policy, if you look at the new NCERT, the latest NCERTs, they are based on the new national education policy. In NEP, it has got huge relevance. NEP में officially कहा है, you have to inculcate Indian culture, IKS, into the studies of history, of polity, of geography, economy, society, everywhere. Not only that, it is there in NEP and latest NCERT, it is also as a part of UGC curriculum for BA and MA. This IKS is becoming important. तो syllabus में important है ही,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, एंड बाहर का जो पूरा आजकल का इंटेलेक्चुअल एटमोस्फियर है, आई केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल्चर है, करना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग. The problem we face is not only that we don't study it in our optional much in detail, but there is no good book. Although I love the subject of culture, but I have to be very honest, there is no single good book available. What are the usual resources? Some people talk about the new NCERT of 11th and 12th standard, art history, art and culture NCERT. Now that art and culture NCERT which was brought 2011-12 में आई थी, and 15 साल तक वो रही. That NCERT is good, but it has got a lot of problems. I know, as a matter of fact, because I know some of the authors, these NCERTs are written by art historians who are not coming from history background. They are specifically trained in art history, तो वो बहुत सारी factual हो गई. They are not contextualized in our timeline properly. तो हमें उसमें से समझना, facts निकालना मुश्किल हो जाता है. That is the problem with the NCERT. Then some people say go for CCRT. Now, CCRT is a very good site, but again it has got a lot of facts. It's online, उसके print भी मिलते हैं. It's a free resource. I find it to be very good, but it has got a lot of facts. Lot of facts. So we face a serious problem that for culture there is no single good book. The solution out of it is very easy. You have to divide art and culture properly in different parts. The first major part of art and culture is history of religion and philosophy. Buddhism, Jainism, Vedic religion, Bhakti movement, Sufi movement, etc. Now, for history of religion and religion and philosophy, जाके क्वेश्चन बहुत आते हैं. 10 में से 4 सवाल तो इसी के होते हैं. आई सजेस्ट, अगर आपको एक सोर्स चाहिए एटलीस्ट फॉर एंशिएंट इंडिया, इट इज एल बाशम. एल बाशम की जो किताब है अ वंडर दैट वाज इंडिया, उसमें एक चैप्टर है 40-50 पन्नों का, 40-50 पेजेस चैप्टर, that is specifically about history of religion in ancient time. It covers it. The English is a little on higher side. It's very conceptual. It's very academically written, but it is also very nice. If you can do from there, it would solve the problem of religion and philosophy of ancient India. Then we come to cultural part. In cultural part, we have visual arts, we have literary art, and we have performing art. Now let me cover all of them one by one. I'll go in the reverse direction. Let us take performing art. अब हमारा जो PMP कोर्स है उसमें I take around 8 to 10 hours of content on performing arts. 3 lectures लेता हूँ. But I'll tell you very honestly, this topic is not that important for the exam. हर साल के PYQ में देखोगे आप, एक आध सवाल शायद आता है. In 3 years, they might ask one question on performing art. They don't ask it every year. So अगर कल्चर के 3 पार्ट है, विजुअल आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, based on the PYQ analysis, at least I can very obviously say the weightage of performing arts is least. तो अगर आपको प्रायोरिटाइज करनी है, समय नहीं है, if you want to leave some part, leave performing art. एक सवाल आ सकता है बस. और उसमें भी I've seen people, लोग मतलब योजना लेके बैठते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का इशू आया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इशू आया योजना का, वहां पे से ट्राइबल आर्ट्स दियो, उसको नहीं रटो, जरूरत नहीं. ट्राइबल आर्ट्स के ऊपर सवाल कब पूछा था बताओ मुझे. फोक आर्ट 5 साल में एक सवाल आता है, लिटरली 5 years 1 question. फॉर दैट यू कांट बी स्पेंडिंग 4-5 दिन अलग से बैठ के रटने के. इट डजंट मेक एनी सेंस. सो ऑफ ऑल द कल्चरल पार्ट्स, द लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम exam viewpoint is performing arts, and folk and regional and tribal art forms are even less important, again based on the PYQ analysis. अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स करना ही है तो उस पर CCRT इनफ है. Then you come to literary art. Literature is something very interesting, very important, but उसके लिए अलग से सोर्स पढ़ना बड़ा मुश्किल. लिटरेचर क्या है? रिलीजियस एंड सेक्युलर. You have Vedic literature, we have Buddhist literature, we have Jain literature, we have dance, dramatic literature, dramaturgy. We have other shastras, we have Arthashastra, we have a lot of books. Medieval time, we have Persian chronicles, etc. Now, if we can't be studying literature separately, for literary art, I do not recommend any source. आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है, उसमें भले आपका एंशिएंट हो या मेडिवल हो, विशाल सर ने हर चैप्टर के पहले आपको सोर्सेस बताए हुए हैं.
उतने से रिवाइज करो से काम हो जाए. That is more than enough for us. Do not try to add more literature. I can give you 100 books. You can't memorize. Not required. We have already covered literary sources of every era of Delhi Sultanate, of Mughals, of regional, etc., of Mauryan era, Gupta era. More than sufficient. Practically more than sufficient. Now they may ask a question on, for example, couple of years ago they asked a question on Hamira Mahakavya by Nyaya Chandra Suri. Now Hamira Mahakavya by Nyaya Chandra Suri is a part of Delhi Sultanate, because we study the difference or the conflict between Sultanate and the Rajputs. And the history sources for us are Sultanate ke Persian chronicles, Siraj ho or Farishta ho or Barni ho. But they give us one side story. Do we have the story from the other side, Mughal chronicles or the Rajput chronicles? Well, they may be less reliable, more poetic, but they do exist. For example, for the Chauhans, it is Hamira Mahakavya by Nyaya Chandra Suri. If you go to Gujarat, we have Pramani Chintamani, for example. So these kind of literature, the vernacular Indian literature that counterpose the Persian Tawarikhs, that is already in our syllabus. So I don't recommend कि आप ज्यादा अलग से लिटरेरी आर्ट्स कहीं से पढ़ो. It is not gonna pay much. जैसे आपका हर एरा के सोर्सेस वाला पार्ट रिवाइज करके जाओ. Then we come to visual arts. Visual arts is the most important part after religion and philosophy. So out of the 10 questions, if I have to take a long-term average, 4 questions will be from religion, then 3 questions would be from visual arts. तो आपके 7 हो गए, बचे में से 2-3 शायद लिटरेचर और एक आध के परफॉर्मेंस आर्ट से आ जाए. So literature is second most important part. Sorry, the visual arts is second most important part after religion philosophy. So for that part, there is no single good source. I have done immense amount of effort to compile those things for PMP. उसके आप notes देख सकते हो. You can pick up any book in the market. Any book in the market. It could be Singhaniya, it could be Poonam Dayya Dalal, it could be any typical commercial textbook in the market. You can pick up. And for visual arts, what is visual arts? इसमें स्तूप है, इसमें temples है, इसमें mosques है, इसमें rock cut caves है, pillars है. For that history, sculpture है. You can pick up any textbook in the market, good enough. उससे आपका काम हो जाए. So this is a strategy I recommend as far as the sources are concerned for art and culture. I know I have to be very honest. This is not single source because there is no single good source available. ठीक है. I would also add one more point. That point is again PYQs. Here also the same strategy of PYQ, the all last 40 years questions, and in those 40 years questions, जितने सारे facts है, all of them must be added to your notes. That is going to be very important. And on top of that, you can add RTFQ. In RTFQ, will be a lot of questions. ठीक है. So now let me go to, देखो जो traditional sources है ना, they have problem. The coach is asking, what about NCERT? NCERT is otherwise a good book, but it is not written for art history. NCERT may have certain good things, no doubt, but NCERT tries to cover entire history. And in the entire history, they give time, space to polity also, administration also, economy also, society also, and then at the end of chapter to religion, philosophy, culture. So the requisite depth is not there. आप ऐसे समझो कि अगर यूपीएससी 10 सवाल पूछ रही है, out of those 10 questions, 6 to 8 questions would be from culture, 2 to 4 questions from other parts. But if you go to NCERT, the priority gets reversed. NCERT gives equal space to polity, to administration, to economy, to society, to religion, and to culture. NCERT wants to cover the broad spectrum, every part equal. But UPSC is not giving equal focus on every part. UPSC is giving extra focus on religion and culture. So NCERT थोड़ी faulty हो जाती है. The generic NCERT. And the problem with art NCERT, fine arts NCERT, I discussed already in the beginning. यहाँ पे मैंने बता दी कि वो written by the technical people, not properly contextualized, they become factual. उसमें भी अगर आपको पढ़ना है, the first 11th standard fine arts is better because it covers at least some sculpture, some temples, etc. The second NCERT, fine arts की 12th standard की, it has got a lot of painting, miniature painting. उसमें शायद इतने facts है. I don't recommend the 12th standard fine arts NCERT. एक आध क्वेश्चन शायद आ भी जाए, but very rarely. मतलब नहीं, इतना टाइम इन्वेस्ट करें उसमें. हाँ, जो 12th की NCERT आई थी 2000, I think it came in 2021 or 2022. That very year I reduced all of them into notes. और मेरे notes बन गए 30 पन्ने के.
Next year I reduced it further, बन गए 20 pages, 25 pages के. Now I use those notes in the class to teach miniature painting in detail. Miniature painting का lecture मेरा चलता है 2-2.5 घंटा. But I know, to be very honest, उसमें शायद एक सवाल आए 2-3 साल में एक सवाल. I think last time the question was asked was Bunny Thani question. उसके बाद तो सवाल पूछा नहीं है from miniature painting as such. तो हाँ, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहो कि it's been too many years, maybe they asked this time, they maybe. But I would say कि in fine arts NCERT books were two of 11th and 12th. 11th is much more important than 10th, अगर पढ़ने ही है तो. ठीक है. अब जब हम पीएमपी पढ़ाते हैं, इन पीएमपी वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम अगेन कौशिक. If you have joined PMP, should we read ancient medieval notes of PMP or just revise optional notes is enough? Kaushi, if you have joined PMP, then I will cover the things thoroughly in the class. That class itself will be a good revision for you. And in the class, I would give around 70% time to art and culture also. So you don't have to worry. ठीक है, it will be comprehensive material with lot of art and culture, and in class revision आपके अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. We have Gulshan asking question. Sir, have read Upinder Singh before attending lecture and before notes during my PG. But after attending lectures and notes of Vishal sir, when I am reading again some chapters of this book, it seems that it is new again and looking beneficial also. Should I read or leave it? देखो Gulshan, if you want to read Upinder Singh, I am not going to dissuade. पढ़ो, अच्छी किताब है. I have personally read the book 20 times, literally, and cover to cover 20 times. मैं नींद में उसके आप मुझे नहीं लगती पंक्तियां सर वो बता किताब, दूंगा. वे बोरिंग लगती है वो किताब. अरे सर मुझे तो बड़ी, मैं तो एनीवे ठीक है. बट द पॉइंट इज दैट इफ यू आर डूइंग इट फॉर ऑप्शनल, मे बी यू कैन डू इट, मे बी, बट यू शुड नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू लीव. मुझे बड़ा समय लगा टू अंडरस्टैंड इसमें से क्या नहीं पढ़ना है ना. बट इफ यू आर गोना डू इट ओनली एंड ओनली फॉर जीएस एंड प्रीलिम्स, आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल. सर इफ यू हैव जॉइंड, ठीक है. If you join PMP, For the then polity administration, etc., we should read optional notes as you suggested earlier, or only PMP. Anonymous, I don't know who you are. Only PMP will be very easy. आप समझो, हम I think lectures का भी PMP में मेरे जनवरी में है या फरवरी में, जनवरी में. So for you, it will be a good revision in the class. That is going to ऑप्शनल be का more. रिवीजन हो जाएगा. And secondly, अपने notes, if I notes समझो 100 पन्ने के हैं, of those 100 pages, almost 60-70 pages will be for art and culture. Whatever material you will have in the notes for purely ancient and medieval will not be much, so don't worry. Don't worry. गुलशन का क्वेश्चन आया है, सेलेक्टिव स्टडी फॉर ऑप्शनल. मुझे लग रहा है पूछ रहे हैं, कैन वी यूज वॉट एवर वी डू इन आर प्रिपरेशन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन? Sir, I don't understand the question. सर, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन क्या ऑप्शनल के प्रिपरेशन को रिप्लेस कर सकता है सिलेक्टिवली? देखो, लेट अस टेक उपेंद्र का एग्जांपल. उपेंद्र का एग्जांपल ये है कि इफ आई एम रीडिंग उपेंद्र फॉर प्रीलिम्स, what would I read? Firstly, in the initial 1/3 of the book, it is all prehistory and proto-history. खास करके प्री-हिस्ट्री, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, that is not at all for exam. यूपीएससी में प्री-हिस्ट्री बहुत कम आती है, प्रीलिम्स में बहुत कम. 4 साल में एक सवाल शायद आ जाए, तो वो तो मैं किताब को ऐसे ही छोड़ दूं. When I come to the proto-history, Harappa and Vedic, I will focus on some sites and literature. Very easy. But when I go to the historic era, there I would be focusing on the first part of chapter and last part of chapter. The first part is sources, last is religion, philosophy and culture. अगर उपिंदर पढ़ना ही है, तो I think only this much is enough. Leave everything before Harappa. Leave archaeology completely. Harappa and Veda focus only on sources. In case of historic era, the first part of sources and last part of religion, culture, philosophy. That is enough. ये सारा करने में भी आपको शायद हफ्ता के ऊपर हफ्ता तो लग ही जाएगा आराम से. That is how. But एक पॉइंट सर कि जीएस का प्रिपरेशन कैन नेवर बी एन सब्स्टिट्यूट फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन, क्योंकि अप्रोच अलग होता है, स्ट्रैटेजी अलग होता है. इट इज Yes. मच एनालिटिकल ओवर देयर.
यश का क्वेश्चन आया है अबाउट नोट कंसोलिडेशन, बट आई थिंक दैट इज स्पेसिफिक मोर टू ऑप्शनल, तो आई डोंट थिंक रेलेवेंट है यहाँ पे वो। एक डाउट था रिगार्डिंग नोट कंसोलिडेशन, मैंने हॉट करा है और लेक्चर्स प्लस हैंडआउट पढ़े हैं 2 बार. Yes, we'll discuss it separately. Today's topic is primarily how to reorient yourself towards the history for prelims. ठीक है. अच्छा, she is Maitri. Okay. ठीक है. I have experienced the history optional significance in prelims 2025. I scored half the questions correct without any prelims scores. Exactly, Ali. But half the question is not enough. That is my main point. आपको 70%। हाँ 70% आने चाहिए. हाफ क्वेश्चंस करेक्ट तो जीएस वाला कर लेगा एक महीने की मेहनत से. आपको उसके ऊपर करना है by 3 से 4 सवाल. That is important. So let me finish the last part now. That is modern India. तो modern India के लिए भी संग्राम was asking should he be reading शेखर बंदोपाध्याय. Now modern के लिए the strategy is much similar to ancient medieval. 4 सवाल आते हैं. पहले उतने भी नहीं आते थे, अब हो गए शुरू. So what I would recommend is not to add any new book. If you have read from any source, read that, continue using the source. उसी को रिवाइज करो 2 बार. आपके क्लास नोट्स हो या बुक हो, जो कुछ हो, बट जस्ट रिवाइज इट. दैट इज वन. सेकेंडली 40 years PYQ. Thirdly RTFQ. This is all. Same strategy for ancient, medieval and modern. If you have not read बंदोपाध्याय before, don't add it now. यहाँ पे सबसे बड़ा फोमो होता है स्पेक्ट्रम का. नाउ आई वुड उसके बारे में मैं क्या बताऊं. स्पेक्ट्रम इज a book written by people, set of people, by just compiling 3, 4, 5 books. NCERT ho, Vipin Chandra ho, Smith Sarkar ho, etc. It has lost coherence over the years because they kept on adding chapters after chapters after chapters. It is no more a pocket book. पहली किताब 200 पन्ने की होती थी, 3 दिन में खत्म हो जाती थी, 4 दिन. Now it takes 3 to 4 weeks and not 3 to 4 days. If you actually try to read spectrum cover to cover, तो आपको कम से कम 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लग जाए. Secondly, you cannot take notes of it. किताब ही notes है. How can you take notes out of notes? It is waste of time. Thirdly, the book has a lot of internal structural problems. तो उस किताब को पढ़ के conceptual clarity नहीं बनती है. So I generally dislike the spectrum book. But if you want to do it anyway, then the strategy is very simple. एक किताब खरीद लो स्पेक्ट्रम की, जस्ट टीयर इट डाउन, उस किताब को फाड़ दो और फाड़ के हर चैप्टर के एंड में देयर इज समरी. जस्ट कलेक्ट दो समरी पेजेस टुगेदर एंड स्टेपल देम. आपकी समरी बुक बन जाएगी स्पेक्ट्रम की. एंड वो समरी बुक जो है बस उसी से रिवाइज करो. दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. विल इट हैव ऑल द फैक्ट्स? ऑब्वियसली नो, इट विल नॉट हैव ऑल द फैक्ट्स, बट यू हैव डन योर ओन नोट्स. You have done all the PYQs with 4 options and you have done RTFQ also. So in that case, at a max, this summary will be helpful for quick revision. Nothing more than that. But 4 सवाल आएंगे, 4 में से 2 GS वाला भी करेगा, आप भी करोगे. You will do 1 question extra than that. That's all. चौथा सवाल जो होगा, जो किसी को शायद नहीं है, ठीक है. So don't worry about that. So that is how I would recommend. Spectrum फाड़ने का मन तो सबका होता है. Thank you for giving green signal, sir. अरे अमन, I'll tell you one thing. When I wanted to do it as a student, I did not dare. So I purchased 2 spectrums. एक अच्छे रखे और एक फाड़ने के लिए. तो anyway. So medieval, early medieval के जो level of IS के lectures हैं, should those be revised enough for prelims? Yes. The strategy for ancient and medieval is exactly the same. Your own notes की revision, PYQ and RTFQ. That's all. If you take part in PMP, तो हाँ PMP में for early medieval we give around 6 hours. उसमें it will be covered for political, economic, social history and another almost 8 hours for cultural history of early medieval. वहाँ पे वो हो जाए. I'm a student of history. He's asking, can we use optional notes for modern? That's what I'm saying. Whatever your primary notes are, ideally you should prefer them, and then PYQ and RTFQ. That's all. Ali is asking, sir, I am a student of history. I have completed BA and post-graduation in history, but I often feel confused. Whenever I watch your lectures, I realize how vast the subject is, and I feel that I know very little. I currently have the opportunity to prepare for UGC NET along with UPSC.
At the same time, I want to build a strong and comprehensive understanding of history, but I'm unsure how to approach it effectively. Could you please guide me on how to study history in structured manner and also suggest the best sources for ancient, medieval, modern periods? Alia, this question is about generic history preparation. I think we should discuss it separately. As far as the strategy for prelims history goes, I don't think this question is in that domain. तो उस कॉलेज से बात करते हैं. You are part of, if you are part of our group, you can just drop a message. We'll discuss it personally. ठीक. Arun Raj has a very good question. As an optional student, can we extend our optional preparation till March along with answer writing? Yes. देखो उसमें सर सबके लिए अलग अलग होता है. नहीं मैं सर I'll tell you my point यहाँ पे. You can do not only till March, you can do till May also. But एक समझो, which part of history optional? Not world history, not post independence. अगर आपको करना ही है ancient medieval करो या फिर modern करो. That is my, so it's not going to be waste. Rather, I would recommend one thing on top of it. Even if I'm not doing answer writing, let us say I'm preparing purely for prelims. I'm reading, let us say, modern India. So modern India, when I go chapter to chapter, I would personally, before and after every chapter, look at all the PYQs. Yes, Sangram. Look at all the PYQs. And which PYQs? PYQs of all the three things. Prelims, GS mains, and option. समझो मैं अभी NCM, CDM, QIM पढ़ रहा हूँ, तो it takes hardly 5 minutes for me to read optional PYQ. अपनी PYQ बुक तो सबके पास है, it's free PDF available. Chapter by chapter वहाँ segregation किया हुआ है. Just read the questions before chapter, reading, revision, and after revision. It will not add a lot of time. It is very easy to do. इससे आपकी revision अपने आप optional revision होते रहेगी. You will always keep contextualizing things. So whatever part of history you revise, before and after, just read PYQs. Rather, I would go one step ahead and say, if you do not read PYQs on any single day, उस दिन की पूरी पढ़ाई बेकार है. आपने कितना भी मन लगा के पढ़ाई करी, कितना भी, सब बेकार है. If you don't read PYQs, आप जो कुछ पढ़ रहे हो, whichever subject, whichever chapter, on that very day, you have to keep looking at the PYQs. It's like इसका कोई विकल्प नहीं है. There is no option. ठीक. So prelims preparation can also automatically develop as optional preparation if you do this. But only if you do this. Yes. Any other doubt? Sangram, I think जो हमारा discussion 2-4 दिन पहले हुआ था, I have discussed all those points. Is it self? It is easy, clear, clarity, concept, जो कुछ है. Mapping book also helping for prelims. Anil, yes, it will definitely help, but it is not written for prelims as such. उसमें हमने इतने सारे archaeologists डाल दिए हैं, information boxes हैं, tables हैं. So I know it has got a lot of interesting things that will help in prelims. But if it helps in prelims, it is only ittafaqan. It is only incidental. It is not purposeful. उसी में क्लैरिटी आ गई थी. Now much more clear. Okay. पृथ्वी सर इसका रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? मतलब वी आर सिटिंग एट होम एंड हैविंग डिस्कशन. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेल अस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ. यस दे डू. ओके करेक्ट. क्योंकि पहले तो बहुत सवाल आते थे सर हिस्ट्री से. यस. ठीक सर है. प्रिया इज आस्किंग, would you recommend joining DAMP with PMP and CSAT, or one shall focus on prelims only? Priya, I'll be very honest. If you are joining DAMP, then you will have to give 3 hours कम से कम. 2 घंटा revision, 1 घंटा writing and evaluation. And what for? 2 घंटा revision, half an hour writing, half an hour video watching. If you are able to give 3 hours for history, then DAMP will be extremely helpful. But provided you can give 3 hours for history, at least for next 3 months. Optional के डाउट्स हम ये अलग से करते हैं. You have numbers also, you can just drop a message. Okay. I have first edition of my book. What is the second edition? Kamalesh, it's some updates, some sites added, etc. But if you have first edition, keep the first edition. Acha, Prithvi could not join because of, okay.
Prithvi, are you a student? Do you have access to portal? Okay. Then the session is being recorded. I'll see. कौन से portal अगर कौन से सेशन में है, प्रोग्राम में है, वो उस पर डलवा देंगे। हाँ, yes. पृथ्वी, कौन से वाले प्रोग्राम में हो आप? संडे लाइव ना? ठीक है, डलवा देंगे उस पर। You join PMP, it is no time to manage damn course. What I will do? देखो, I would say damn kill you need to give 2 to 3 hours every day. उतना टाइम नहीं दे पाए तो you will not be doing justice to the program or to yourself. Yes. That's it. आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, वरना मतलब what is the point of joining a course otherwise? क्योंकि वहां पे वो टाइम लिमिटेड भी है ना, डैम कोर्स, मतलब वो एक एक दिन पे एक्सपायर होते जाता है वो सेशन, तो इट कीप्स लूजिंग रिलेवेंस आल्सो। We have had, sir, पास्ट में स्टूडेंट्स अपने रह चुके हैं। देखो, मैं आपको आई विल टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ डैम। I should not be telling this, but होता क्या है, we have had at least 50% students in the DAM who don't write answers. If we have 100 admissions, we get 50 submissions. 50 people don't submit the answers. They just keep collecting the model answers, collecting the videos with the hope कि एक दिन देखेंगे बाद में। वो दिन कभी आता नहीं It's a है। good collection, but I doubt whether they actually do it later on also. So even if you don't submit the answers every day, you want to just watch the videos, you want to collect the model answers for future, etc., you may do that. But उसका ज्यादा लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम भी देखेंगे। ट्रू। ठीक है, I have answered all the doubts regarding the history GS prelims preparation. और कुछ जनरल डाउट हो तो पूछे, स्पेसिफिकली हिस्ट्री जीएस प्रीलिम्स प्रिपरेशन की बात करेंगे। ये सीखने तो काफी मिलता है यश, बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज बाय आंसर राइटिंग ओनली। इट्स इनिशियल बैरियर। AMAC मॉड्यूल will let us know estimated time. संग्राम, AMAC मॉड्यूल जो होता है, it will come in January. I think second week of January it will start in PMP, and I teach around for 12 lectures, in which each lecture is about 5 hours. So it goes to 50 to 55, 60, 50 to 60 hours. That is the whole duration, in which we cover ancient also, medieval also, and culture and religion in detail. ठीक है। Can I ask question watching this video? हाँ पृथ्वी, बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखना फिर पूछना। एनी ट्रिक फॉर द D-Day? अमन, ये सब बातें अभी नहीं करते हैं, अभी फोकस ऑन कवरिंग सिलेबस प्रॉपरली। धी धृति स्मृति वाला प्रोसेस। So please tell me, which is important for me. I have history optional, which is better, damp or hot? So it depends on time you have. If you want to do answer writing practice more, damp is better. If you want to just cover a lot of questions in a lot of details, hot is better. It's not hots, it's hot 500. There is no S in it. It's hot 500. ठीक है, hots में S कहाँ से आ गया पता है? Yes, धीरे धीरे स्मृति वाला process, correct. After prelims, there is any test series for mains? Yes, Anil, every year we come with a crash course come test series after prelims for history optional. Like for history questions, we don't know but want to attempt, taking help from language and options. अमन, ये सब चीजें होती है ना, हम उसकी बात करेंगे ट्रिक वाली, बट चलो, it's not about that today. Let us not go there. This session recording is the starting part. ठीक है, okay. Estimated time of launch after the course, it will come in perhaps mid-February. One general question is that even tough putting all the hours, the next day half the things are unable to remember. What technique do you remember things? I don't know, it's not about memorizing, it's about understanding things. You know, those people who tend to focus a lot on memorization find it difficult to clear prelims. Prelims is purposeful, designed to ask so random questions sometimes, or apparently random questions, that they want to exclude the people who focus on memory a lot. Memory has a role to, I'm not denying memory has important role to play. Some ratta is required, but out of, in the whole scheme of things, ratta का जो requirement है 30% के लिए. जैसे कि if you go to environment, ratta is required. Lot of ratta is required. But in other subjects, it is not that much. So there is no technique to remember things as such. It is about understanding things.
एंड वैसे भी सर, रट्टा फॉर रट्टा सेक इज लाइक स्विमिंग अप अ स्ट्रीम, की नदी बह रही है, आप उसके अगेंस्ट, करंट के अगेंस्ट तैरने हम्म, का कोशिश कर रहे हो। ट्राई टू स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो yes, जब आप कहानी के अंदर उन फैक्ट्स को इंटीग्रेट करते हो, इट इज ओनली देन, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो वो फैक्ट्स अपने आप उसमें एम्बेड हो जाते हैं, तो अलग से yeah, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। right, true. हम्म। So Najib is asking how much MMP art and culture lecture useful for prelims. Najib, MMP के lecture जो है, they provide lot of perspective and context. So once you start preparing for prelims, we'll come up with a lot of facts, and those facts will be easily rememberable, understandable if you have the MMP का network, MMP का context. So that is the importance of MMP. आपको perspectives पता है, but facts you will anyway need. Acha, actually, hot is more than 500, to be fair. That is very true. We have 84 around lectures. Every lecture covers 8 to 10 questions. So we cover about 800, 7 to 800 questions. But Ash, हुआ ये था ना, when we started Hot 500, I think 1.5 साल पहले, we thought कि 500 questions करना अपने आप में ambitious बात है, बच्चे कैसे बैठेंगे? And in the very first year, we ended up doing 800 questions in the class. तो अब तब तक नाम तो बन चुका था. अब नाम बन चुका है तो चेंज भी नहीं कर सकते. So we were stuck with Hot 500. Ideally, it should be called Hot 800, Hot 1000 वगैरह. But it's okay. कोई बात नहीं. We are over delivering there. आई I'm वांट टू writing and I'm gunning for 2027. Or you're asking. That's why I was wondering whether DIME is better or Hot 500. Saurabh, I यू think हैव, अगर हाँ, आपको एक बार ना yes, बात कर लें, वो बेहतर रहेगा। इंस्टीट्यूट पे कॉल करके गेट, यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बेटर, गाइड यू अकॉर्डिंगली। ठीक है perfect. DIME is for cool people, Hot is for mom people. सर। Indian rules apply. ठीक है. For modern history, are there less facts in optional notes, unlike asked in prelims? Anonymous or Maitri, it is true. That's why I said you have to do PYQs of 40 years plus RTFQ. That will solve the problem. And if there is any new fact beyond those PYQs of 40 years with 4 options and RTFQ also, then it is too difficult for anybody. Forget about it. Go practically. Okay. If you start picking up a new book, it will take a lot of time. You will lose advantage over others. 18 में 14 करना है, बाकी को 10 आने वाले. फंडामेंटल पॉइंट वही. ठीक है. और Our हिस्ट्री history prelims to clarify करंट। current affairs, where they are sometimes. तो last year we started a new thing. We cover art and culture current affairs on YouTube. उसके हम 2 lectures, एक lectures लेते हैं. I will also be doing it this year also before the prelims. Prelim के 15 दिन पहले हम करेंगे lecture, जिसमें we'll cover एक साल का पूरा art and culture का current affairs on YouTube. You can do it there. But our experience is that not a lot of questions are influenced by that. ठीक है. बट 2-3 घंटे देके इफ यू वांट टू कवर द ग्राउंड, नुकसान तो है नहीं, तो हम उसको करेंगे. 25 मई को अगर प्रीलिम्स है तो मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में विल हैव दैट लेक्चर गोइंग. ठीक है. इज देयर एनी जनरल टिप फॉर प्रीलिम्स? आई हैव गिवन वन प्रीलिम्स बट हैव फेल्ड. आई एम प्रिपेयरिंग ऑन माय ओन. सौरभ, अब इट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली व्हाट इज योर वीकनेस. नो, देयर कैन नॉट बी जनरल टिप फॉर एनीबॉडी. इट डिपेंड्स ऑन जनरल एवरीबॉडी टिप इज ये वेरी. है, सोर्सेस को कंसोलिडेट करिए, बहुत ज्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागिए। एक अच्छा सोर्स आइडेंटिफाई करिए हर सब्जेक्ट के लिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। पीवाईक्यूज के ऊपर स्पेसिफिक अटेंशन होना चाहिए। एंड अपने जो अपना प्रिपरेशन है उसको कंसोलिडेट करने के लिए केवल प्री के लिए अलग से मत पढ़िए, मेंस के अंदर प्री के प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करिए। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो होलिस्टिक होना चाहिए प्रिपरेशन। माय सजेशन इज ऑलवेज डू लॉट ऑफ पीवाईक्यूज. फर्क ये है कि आपको नींद में याद होने चाहिए 40 साल का. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. But once you do it again and again and again and again, then you start seeing the pattern. And then दूसरी बात है, पीवाईक्यू इसलिए नहीं करने कि वो शायद रिपीट हो जाए. रिपीट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता. पीवाईक्यूज टेल अस हाउ यूपीएससी थिंक्स, and that lens is useful when we study on our own from any other source. ठीक है.
So if I'm reading polity also, economy also, I know I need to know how UPSC thinks. With that lens, I will read my book and notes. Like this year's Cholapur. Moto, this thing happens. Sometimes UPSC may be influenced by current affair, but उससे भी कई ज्यादा क्या होता है ना, after the questions appear, then we try to connect the dots कि शायद इसलिए सवाल पूछा होगा, करंट में होता है, करंट में इतनी चीजें होती है, there is some correction all the time. ठीक, we can't be certain कि वो कारण है. हिस्टोरिकल रूलर्स की तरह नोट्स का एक्सपांशन के बाद कंसोलिडेशन करना भी जरूरी है. अमन इज वन और लेकिन प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. आई थिंक सर वी कैन रैप इट अप टुडे यस सर. without result. And thank you especially to Sangram to give this idea. हाँ. So यस. ठीक है. ओके, चलो. थैंक यू ऑल. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.